Recording in progress. ঠিক নেই এখন যদি যাই তো সে রাত্রে Okay, so hello everyone and good evening. We will start with today's internship meeting. So first of all, I will take some name for the presentation and we will go through that. And after that, we will go through the general queries. Okay, I will share my screen first. Okay, so I hope you guys can see my screen. So there are some people who are scheduled for the presentation. Actually, we don't have like new people today for presentation, but we are going to like finish with people who have not given their presentation today. If they have not given their presentation today, then they will receive the leave email. So I will take the name, that is Mahendra Jangir. I believe you were told to like create a video and post it in Trello. And then Abdul Qadir Mustafa Soherwala, you have to present today. Akhila Devara Shetty, you have to present today. Sushmita Sharma, Monica Bharti, Pavitra S, Subhadeep Panda, Divya Vishnu Kambat, Tamanna Rawat, and Anand Kumar, Harshdeep Sanjay Khade, and Rutuja Vijay Kadam. All you have to present today, or you will receive your you will not receive your internship email from now on. You will be marked as absent. Okay. So we'll stop it and see who are the people in the meet right now. So please raise your hand if I have taken your name for the presentations. All the people who are scheduled for the presentation. Rutuja, I believe you are in the meet. Yes, please turn your camera. Hello, sir. Yes, please turn your camera on first. Let's see. Hello, sir. But I haven't got the mail like today is my presentation. You have Like- received your mail last week. You have been scheduled for the presentation in last week in the Yes, sir. Due to some reasons, I have skipped that one. And Yes. in that mail, next mail, yesterday I got this one of the mail. In that I got the message like you have to click on the schedule your presentation. Yes, So you after were that, scheduled the presentation. You have been scheduled for the presentation. But sir, today is my presentation. It's I haven't got that mail. Like If today is your presentation. see, if your presentation was on 14, okay, and you skipped it, then it will generally be scheduled for the next day. Next. Next day, you get 2 days, okay. And in the last like 4-5 meetings, we have been calling your name. You watch the internship Sir, meeting due to my, recording, I we have been calling your name. Sir, due to throat infection, I am got to like I can't talk so fluently, so that's why I have joined any meeting. Then Can I like, give next day? did you Tomorrow? like see, did you give this information in Trello that you have this problem, that is why you couldn't give your presentation? Okay, sir. But can I give tomorrow? I'm not asking for okay. Did you give this presentation in Trello? No. Sorry, did you give this information in Trello that you have this throat infection and reschedule your presentation? I think I have okay. I think I have answered in mail like for giving response in mail. Due to personal issue, I can't attend the meeting. Okay, then the management will decide when your presentation will be there. But tomorrow, if you get the mail, then only like give your presentation. Don't come for presentation tomorrow. Only and only if you receive now, because the last presentation is now cancelled for you. But I have clicked on the scheduled presentation. Yeah, then management will decide like what to do with you. Okay. Okay, sir. Yeah. And are there other people
with the presentation? If not, then I believe they are not joining for the presentation. Then we will take the general queries. Please raise your hand if you have any kind of general queries. Yes, Raj. Hello. Am I visible, sir? Yes, you are visible. Sir, I was on leave and I was back from my leave on 21st Feb. Okay. And I am every day updating my status on Trello, but I am not getting response from your side. I even mailed to sir today. So kindly update my internship status to active. I have started doing my internship work and now I want to show that. That's why I am not receiving any mail from Hackveda. Okay, So so if please you are look not into it. receiving any mail, then that is fine. As long as like you are posting on Trello. Yes, sir, I am in updating my future, work if you daily get on like, Trello. see, in future, if you get like mail for that you are absent for this day, then you can just tell them that I have uploaded it on the Trello, Ac- and you will be marked like present when you are Actually, asked. my status is at leave Okay. right now. That's why. So please update it to active. Okay. Am I audible? Yes, yes, you are audible. That is fine. See, like there is some problem with the mail today, and I believe lots of people have not received like the attendance mail today. That is fine. So you will be like marked as active by tomorrow. Okay, sure, Please sir. put Thank your mail in the chat box. I will also post it from my side to you. mark Okay, you okay. as active. Okay. Thank you so much. Yes. I will post it right now. Yes. So next is Sai Prasad. Hello, sir. Yes. Good evening. Good evening, sir. I scheduled my presentation yesterday, but I haven't received any mail See, if for the you have presentation. scheduled your presentation yesterday, then it will take like 24 to 48 hours. Okay. Okay. Yeah. But as like we don't have like a lot of people for today general query, then after the general queries are end, we can take a mock presentation. Okay. Okay, It's sir. completely fine. Then I can give you feedback, and if you like, get rescheduled for that, then you will certainly perform a better in Yeah. presentation. Okay. Then you can do a Okay. mock presentation today. Just wait till I get all the like general queries. Okay. Yeah, sure. Yeah. Is there anyone else for the general queries left? Please turn your cam on. Hello, is there anyone else for the general queries? Then you can certainly turn your cam on and ask. Anish Kumar Jha, please turn your cam on. You have Hello, been am I told. audible? Yes, you are audible. Hello. मेरा I think visible नहीं हूँ मैं. Yes, now you are visible. हाँ. भाई क्या कहते हैं? हाँ बोलो भाई. मैं तो पाइथन टीम से हूँ, पाइथन डेवलपमेंट की टीम से. तो मेरा 2 महीने हो चुके हैं. ठीक है. और अभी सर ने जो प्रोजेक्ट दे रखा है जेंगो के ऊपर. तो मैं फिलहाल उस पर वर्क कर रहा हूँ. अभी जो वीडियो सर ने कहा था देखने के लिए, तो वो मुझे समझ में आया नहीं, इसलिए मैं ट्यूटोरियल्स देख रहा हूँ. जो यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स नहीं होते, वो देख रहा हूँ. बट और मैं सर्टिफिकेट का मैसेज मैं ट्रेलर पे डाल दिया, बट सर देख नहीं रहे हैं. बट मैं अगर सर्टिफिकेट तुमने देखो सर्टिफिकेट का अगर तुमने मैसेज डाला है ना, तो सर ने देखा है, बट अभी सर्टिफिकेट नहीं इशू कर रहे. कल सर ने बताया ये मतलब मंथ के एंड में या फिर मतलब नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक के अंदर थोड़ा इवेल्युएशन सबका चेक करेंगे. इस और लास्ट मंथ हम लोग मतलब सबका इवेल्युएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसके बाद आपको बताया जाएगा. ठीक है. आपके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, 4-5 लोग हैं जिन्होंने मैसेज डाला हुआ है. मेरे वेब डेवलपमेंट ग्रुप में भी 3-4 लोग हैं. तो सबका ये चेक किया जा रहा है. नेक्स्ट वीक के फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक तक आपको मिल जाएगा. वो तो पर भाई थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि परसों तक मैं पोर्टल एक हमारे पास सुपर सेट का एक पोर्टल होता है कॉलेज में. अच्छा. तो वो परसों बंद हो जाएगा. तो हमें जो भी अपडेट करना पड़ेगा इसी परसों तक ही करना पड़ेगा, क्योंकि उस वजह 6 महीनों बाद स्टार्ट होगा. तो प्लेसमेंट का सीजन खत्म ही हो जाता है उस टाइम पे. आज कितना डेट है? आज तो आज 23 है. अच्छा 23 है ना. तो अभी तो देखो फ्राइडे हो जाएगा और सैटरडे हो जाएगा. ठीक है. तो फ्राइडे सैटरडे को रहेगा, नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा. अगर कल नहीं हुआ तो कल मैं आप अपना ईमेल डाल दो, मैं भी अपने साइड से मैसेज कर देता हूँ. नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक तक ही मिलेगा. भाई ट्राई करना कि मुझे 1-2 दिन में मिल जाए. क्योंकि पोर्टल बंद हो गया ना यार, तो फिर वो खुलेगा नहीं. पोर्टल फ्रोजन हो जाता है, फिर प्लेसमेंट सेल में जाना पड़ता है. बहुत ज्यादा लफड़ा करता है कॉलेज वाले.
नहीं यार देखो अभी मतलब तुम अकेला, तुम्हारा अकेले का ये टेंशन नहीं है, बहुत सारे लोग का है। तो सर्टनली हम लोग ट्राई भाई करेंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी भाई, कौन बोल रहा है बीच में? हेलो। और आपका नाम लिया गया है कि आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? अभी मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना। भाई मैं और अनीश ना सेम कॉलेज से हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हाँ हूँ। तो 2 मिनट रुक जाओ ना, आप अनीश को देयर इज मैसेज ना कर दो। कॉमन सेंस ना कि कब किसका नाम लिया गया है, कब किसको बोलना है। रैंडमली थोड़ा ना आप उठ के किसी की भी बात काट दोगे बीच में। Put it in chat box. I will see that you are in same college. Then I will like answer. Tell you to turn your cam on. कैन आई स्पीक? Yes, yes, you can. हाँ, तो वो परसों ये लोग सुपर सेट बंद कर देंगे तो फिर फ्रोजन हो जाएगा, तो हमारे पे इंटर्नशिप का जो पोर्टल है ना वही बंद हो जाएगा। और इंटर्नशिप ने बेसिकली रिज्यूमे को डेवलप करने के लिए किया है, अब एक तरीके से बंद ही हो जाएगा तो फिर डाल ही नहीं पाएंगे। इस वक्त डायरेक्ट ठीक है, प्लेसमेंट आप सेशन ट्रेलो स्टार्ट हो जाएगा। ट्रेलो के ऊपर डाल दो। हम लोग इवैल्यूएशन चेक करके आपका परसों तक ट्राई कर देंगे। हाँ जी, और मैंने email हो जाएगा। हाँ जी, प्रेजेंटेशन वगैरह भी दे दिया है मैंने, जो अच्छा। सर ने कहा था सब कुछ मैंने दे दिया है। और ट्यूटोरियल्स मैंने सारे देख लिए थे, प्रोजेक्ट मैंने गिटहब पे डाल दिया है। बस मेरा ठीक है। सर्टिफिकेशन का वो है, तो सर्टिफिकेशन यार कैसे भी करके 1-2 दिन में मिल जाता तो मेरे लिए इजी हो जाता। अभी देखो सिस्टम का ये है, तो फिर वो हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीक तक देखो सर्टनली दे ही देंगे, क्योंकि सबका हम लोग इशू करेंगे तो आपका भी हो ही जाएगा। बट ट्राई करेंगे। आप ट्रेलो के ऊपर मैसेज डाल दो फिर से, कॉमन तो मैं बोर्ड के एक अंदर बार डाल दो, प्रोग्रेस अपडेट के अंदर, कि आपका क्या क्या आपका टास्क था, और आपका स्टार्ट डेट कभी है, एंड डेट कभी, आपका ट्रेलो हैंडल क्या है, और ईमेल एड्रेस देना वही वाला जो तुमने रजिस्ट्रेशन पे दिया था, ठीक है। और उसमें आपको भी मैं टैग कर देता हूँ, हाँ मुझे भी कर जिससे देना। आपको और रिमाइंड हो जाए। ठीक है चलेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू भाई। हाँ ठीक है। और तुम्हारे साथ वो कौन बंदा था? अनिश? सुयश था वो। हाँ हेलो, तो अब मैं बोल सकता हूँ? हाँ आप बोलिए, क्या इशू आपको? भाई सेम इशू है, जो अनीश का इशू है आपका वही स्टार्ट मेरा डे इशू है। कभी है? तो स्टार्ट डे हम दोनों का सेम ही था, दिसंबर 1 दिसंबर। ठीक है, तो आपने तो एक बार डाला था शायद कॉमन बोर्ड के अंदर। हाँ मैंने डाला था, निशा भी बट था। सर ने वही 28 का कुछ लिखे भेजा था। तो वही वाली सीन है यार, मेरा 25 तक पोर्टल ओपन है कॉलेज के अकॉर्डिंग। तो यार अगर जब तक मैं डाल दूंगा, क्या एक्चुअली मुझे रिज्यूमे में ऐड करना है, अगर तब तक नहीं करता हूँ तो फिर मेरा मतलब अगर मुझे उसके बाद मिलता भी है तो उसका मतलब मेरे लिए तो वैल्यू ऐड हो जाएगा वो, बट कॉलेज के लिए कोई वैल्यू ऐड नहीं रहेगा। मेरा प्लेसमेंट में जो रिज्यूमे जाएगा उसका कोई मतलब बनेगा नहीं मतलब। ठीक है, ट्रेलो के ऊपर डालो, ट्राई करेंगे, और क्या ही कर सकते हैं। नहीं तो नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगा कंफर्म। और ले लो नेक्स्ट। इन दोनों के ना डिटेल्स ले लो यश, है ना। हाँ ठीक है। इसको सेपरेटली हैंडल कर लेंगे, देख लेंगे ठीक है, क्या हम आप बेस्ट दोनों कर डाल दो सकते मेल। यस। हैं। आपको मेल कर दें? अपना मेल चैट के अंदर डाल दीजिए। ठीक है भाई, ठीक है, और थैंक यू। नेक्स्ट टाइम से प्लीज बीच में ऐसे बोलिए मत, क्योंकि देखो चैट खुला हुआ है, आप बोल दो हाँ चैट नहीं, के अंदर लिख दो ना आई आप, या एग्री, फिर आप मैं अनीश एग्री को करता बोल हूँ। दो, तो अनीश भी मुझे बता देंगे कि सुयश है मेरे साथ, तो वो क्या बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ मैं नहीं, ये तो मैं एग्री करता हूँ, बट वो एक्चुअली वो साथ में थे तो मैंने कहा बोल देता हूँ। तो आप उसको भी बोल सकते हैं ना, आप ऐसे डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज, ठीक है। ओके ओके। ठीक है चलेगा, आप अपना मेल डाल दीजिए, अनीश ने डाला है, आप भी डाल दीजिए। नोट डाउन कर लेता हूँ मैं। गौरव कुमार। Am I audible? यस यू आर ऑडिबल। सर मेरा प्रॉब्लम है सर, मैं कल का जो मीटिंग था सर, उसमें थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण मैं अटेंड नहीं कर पाया। और इसके कारण मेरे को वीडियो का मतलब ट्रेलो का मेरे को अभी तक लिंक नहीं आया है एक्टिवेशन का, तो वही है सर अच्छा, कि मैं देख नहीं पा बस। तो आपको एक्टिवेशन का इशू आया है क्या, कि एक्टिवेट नहीं हुआ आप? एक्टिवेट सर मेरे को अटेंडेंस का आया था, जब मैं बोला ठीक है, अपना तो अटेंडेंस फिर का हो गया, देखिए बट आज आज है ना, आज थोड़ा अटेंडेंस का प्रॉब्लम है, ठीक है। एज लॉन्ग एज आप अपना प्रोग्रेस अपडेट डाल रहे ट्रेलो के ऊपर तो मिल जाएगा। अगर आपका नहीं डाल रहे तो आपने कुछ किया हुआ है, आज प्रोग्रेस किया, कुछ भी टास्क किया? सर टास्क मेरे को असाइन करने को आया था, वो साइन नहीं हुआ? असाइन किया मैं, लेकिन वो आया उधर से कि असाइन हो गई, बट कोई टास्क नहीं आया सर, ऐसा कि मेरे को लिंक पे जाना या वीडियो कुछ आया, ऐसा कुछ नहीं आया सर। मेल खाली पे मेल है क्या? नहीं आता? शेयर मेल योर आया सर। ईमेल। शेयर कर ओके दीजिए ईमेल आप भी। ओके। एंड एनीवन एल्स हैविंग द सेम इशू प्लीज शेयर योर ईमेल। या फिर यश आप स्क्रीन भी शेयर करा सकते हो ना, तुरंत ही देख सकते हैं क्या हाँ इशू। गौरव, आप अपना स्क्रीन शेयर कर दीजिए ईमेल का। गौरव कुमार, यस सर, यस। स्क्रीन शेयर कर दीजिए आप।
सर allow अलाउ कर दिया इसको। सर ये 22 सर स्क्रीन आपकी शेयर नहीं हुई है। नहीं सर वेट सर एक मिनट। सर हो रहा है, दिख रहा है सर? स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग लोडिंग हो रहा है, रुक जा 2 मिनट, तुम्हारा नेटवर्क कुछ इशू लग रहा है। यस सर। हाँ अभी दिख रही है स्क्रीन। सर यही है सर जो अच्छा ठीक है, साइन न्यू क्लिक करना उसके ऊपर। तो इस ठीक है, रिक्वेस्ट आपकी रिसीव हो चुकी है, आपको मिल जाएगा 24 to 78 आवर्स के 48 आवर्स के अंदर। आप अपना ईमेल डाल दीजिए ओके एक चैट मिनट बॉक्स में। एक मिनट एक तो यस मैम। ये मेल इनका 15 मिनट्स एगो रिसीव हुआ है, राइट? यस। यस तो गौरव, आपने इसको सही से पढ़ा नहीं, लिखा क्या है नीचे? योर रिक्वेस्ट विल बी रिव्यूड एंड प्रोसेस विद इन 24 to 40 आवर्स 48 आवर यस मैम। हाँ, तो डाउट क्या था? आपको क्या समझ मैम एक्चुअली ये जो मेल है मैम इस 22 को भी एक मेल आया था मेरे को, सेम आया था, मैं उसमें Let me असाइन किया see. न्यू टास्क के लिए, Let तो me मेरे को see. 20 मैम दिखाता हूँ। यस मैम ये वो गलती से हो गया था मैम। एक दिन पहले आपने 22 यस को मैम। भी यस प्रेजेंटेशन मैम शेड्यूल किया है ना ये तो? मैम वो गलती से हो गया था मैम मेरे। हाँ, और ये न्यू असाइन टास्क ये भी गलती से हुआ था? नो मैम ये 22 को मैं किया था, तो हाँ, 24 आवर 48 आवर 23 मेरे को। को भी कर दिया आपने, मतलब आपको वेट करना चाहिए ना, 48 आवर्स तो वेट करना ही चाहिए। और वैसे यस मैम वो आज इंटरनेट का 20 इशू है देवांशु सर के साथ, तो वो आज कोई भी अटेंडेंस का मेल है या फिर कोई टास्क असाइनिंग का है, वो अभी नहीं हो पाया, शायद 12 बजे से पहले पहले हो जाएगा, राइट? ओके तो पहली चीज ये कि अगर आप एक बार डाल चुके हैं तो आपको 48 आवर्स एटलीस्ट वेट करना है, देन रेज अगेन और इन द मीटिंग। फिर सॉरी आप मैम मैं 24 आवर्स के बाद वो मतलब अभी जस्ट 15 मिनट्स पहले ही किया था, तो राइट इसलिए है ना, तो अब उसके अकॉर्डिंग तो 48 आवर्स अब अगले 2 दिन हो गए ना, तो प्रॉब्लम यस मैम ये है अगर आप बार बार करोगे तो। ओके मैम आई विल नॉट रिपीट इट अगेन मैम। 48 आवर्स के बाद नहीं आता तो आप यश को इन्फॉर्म कीजिए, आप बताइए, तो मीटिंग में हम लोग देखेंगे कि भाई क्या रीजन है। बट आप ऐसे करेंगे तो फिर आपका दिन आपका ही टाइम वेस्ट होगा। यस मैम आई एग्री मैम। जी मैम बस यही था मेरे इनको, थैंक यू मैम। मैम स्टॉप कर देता हूँ। यस, यस आप यश आप कंटिन्यू कीजिए यस। प्लीज। राहुल कुमार। मैम मैं मेल डाल दूँ मेल? नहीं नहीं, आप 48 आवर्स तक रुकिए। राहुल कुमार। हेलो, गुड गुड इवनिंग सर। यस गुड इवनिंग। सर मेरे पास एक क्वेरी है सर। यस। सर मैंने फर्स्ट टास्क और सेकेंड टास्क दोनों कंप्लीट कर लिए थे। 1 सेकेंड सर। मैंने फर्स्ट टास्क एंड सेकेंड टास्क दोनों कंप्लीट कर लिए थे, और जब मैं उन्हें अपडेट प्रोग्रेस पे जब क्लिक कर रहा हूँ तो वहाँ पर नो कार्ड फाउंड बता रहा है सर। ठीक है, तो आप कौन से ग्रुप में हैं? सर जावा ग्रुप 16 बैच। रुकिए, जावा ग्रुप का ना लास्ट टाइम भी ये इशू था, तो वो रिकवर हो रहा है कार्ड, ठीक है। यस वो सर। सर उसके ऊपर काम कर रहे हैं रिकवर करने के लिए, अगर नहीं हुआ तो एक न्यू कार्ड बना दिया जाएगा। ओके। ओके सर। आपको वहां पे करना रहेगा। किसी ने एक गलती से उसको आई वैल्यू डिलीट कर दिया है, ठीक है, तो उसका रिकवरी ट्रेलो के ऊपर बैकएंड में रहता है, अगर वो यस सर। मिल गया तो फिर वो रिकवर हो जाएगा। वो आपका सर नहीं, और आपके साथ और भी बंदे ना, उनका भी इशू है, ठीक है। तो सर बाकी जो हमारा टास्क का वो 20 तारीख का एक डेडलाइन था और फिर 23 का डेडलाइन था, यानी कि आज, तो फिर मतलब वो सब टास्क हम लोग कैसे अपलोड करेंगे, क्योंकि डेडलाइन तो खत्म हो जाएंगे ना सर। आपका टास्क खत्म हो गया ना,
तो यस फिर सर। आप कॉमन बोर्ड के ऊपर जाइए और बताइए कि मेरा ये टास्क था, बस बिकॉज वो जावा कार्ड का इशू है तो मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके कॉमन सर। अपडेट के अंदर प्रोग्रेस का है ना, तो आपका वो मान लिया जाएगा। जब जावा का रिकवर हो जाएगा तो आप वहाँ पे कर देना सर ओके को सर। इन्फॉर्म करके। ठीक है, हाँ सर, मैंने असाइन न्यू टास्क पे भी क्लिक कर दिया था और प्रेजेंटेशन शेड्यूल पे भी क्लिक कर दिया था। तो सर उसमें ऐसा मैसेज है कि कभी किया था? क्या सर? कभी किया था? सर आज मॉर्निंग में 10 बजे किया था। आज किया था तो यार 24 to 48 आवर्स लगेगा, सिंपल सबको बोल रहे हैं। ओके सर, हाँ बस यही डाउट था सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, आपका कार्ड वो हो जाएगा। नहीं हुआ तो आप कॉमन पे कर दीजिए। आपके पास कोई जावा डेवलपर के और भी लोग रहेंगे ना, आप उनको भी बोल दीजिए कि वो भी कॉमन पे कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, वहाँ पे कोई भी कार्ड को आर्काइव या डिलीट नहीं करना है। ठीक है, सबको ओके बता सर। देना। ओके ओके सर, हाँ थैंक यू सर। ठीक है। साई कार्तिक कथा, you have same issue with internships with that. I believe you are from web developer group, right, Sai? Can you turn your cam on? Hello, sir. Yes, you are from web Yes. dev group, right? I believe Yes. you and all the TM blood people are like, sir has told you like he will give it on 28 or by end of this month. Then you will get it like with everyone else Okay, by next week. okay, so he asked me to confirm with the group leader. So I just want to inform you guys. Yeah, that is fine. You can like post it on common board. You can tag me and post it on common board. Okay, okay. But sir has already informed your TM blood team, like all the people, like there are multiple people in your group, right? There is your TL and then there are Yes. other 3 or 4 people. Yeah, we are like, we will process all it together. Okay, you will get it by next week. Okay, okay. That's So Punay Rohankar. Hello, Punya Rohankar, you have raised your hand. हेलो सर, गुड इवनिंग। Yes, good evening. सर टास्क 2 में जो रेफरेंस लिंक रहती है तो उस हाँ, पे क्लिक करने के बाद कार्ड नॉट फाउंड और यू हैव नो परमिशन ऐसा मैसेज आ रहा है। you are from Java group. यस सर। Okay, so तुम्हारा ईमेल का इशू है ना कि ईमेल के ऊपर नहीं हो रहा है। हाँ, ईमेल मेल पर। ठीक है, तो ईमेल को करना पड़ेगा। आप अपना ईमेल डाल दीजिए चैट के अंदर, वो डायरेक्ट सर को ही बताना होगा। ठीक है, आप थैंक यू अपना सर। ईमेल डाल दीजिए, अपना ग्रुप डाल दीजिए और ये भी स्पेसिफाई कीजिए कि मेल की वजह से नहीं हो रहा है। ठीक है, मेल। मेल में से आपको ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, यस, ओके सर। या। सो आदित्य। हेलो सर। यस, गुड इवनिंग। हाँ सर, तो मुझे ये पूछना था कि मेरा वो टीएम ब्लड का जो जैंगो से प्रोजेक्ट बनाना था, वो तो मेरा कंप्लीट हो गया है। और हाँ, और मैं एक स्मॉल प्रेजेंटेशन वीडियो भी बनाया, और ठीक है, 3-4 दिन हो गया, तो मुझे ठीक है। उसका कुछ रिप्लाई नहीं आया अभी तक। कल सर ने बोला था कि एक बार जब हमारा एक बार ये प्रेजेंटेशन हो गया टीएम ब्लड का, तो हम लोग कुछ दिन तक वो सेम प्रेजेंटेशन नहीं लेंगे। ठीक है, तो आपको अभी वेट करना है। आपने अगर वो अपलोड किया है ट्रेलो के अंदर, तो वो उसी के साथ आपको इवेल्युएशन मिल जाएगा। भले ही उसका आपको मतलब मार्क्स ना मिले, मतलब बट बैकएंड के अंदर वो कैलकुलेट होगा। ठीक है, मार्क्स। तो आप उसका ओके, डेमो रिकॉर्ड करके ट्रेलो के ऊपर डाल दिया है, तो आपका वो इवेल्युएट हो जाएगा। तो ग्रेड मुझे अपना मेल पे आ जाएगा क्या? सॉरी, ग्रेड्स मतलब मेरे जो टीममेट को भी वैसे मिला है फॉर्मेट में ग्रेड्स, तो ठीक मुझे है। नहीं मिलेगा क्या वैसे? नहीं नहीं, आपको मेल नहीं आएगा, बट बैकएंड के अंदर वो कैलकुलेट होके आप रहेगा। वो बाद में जब आपका कैलकुलेट करेंगे ना इंटर्नशिप का देना है नहीं देना, तब उसके अंदर आपको पता जाएगा। ठीक है, डोंट वरी सॉरी अबाउट सर, दैट। क्या देना है? वो कैलकुलेट हो जाएगा। आपको सिर्फ ट्रेलो के ऊपर पोस्ट करना है और शेड्यूल कर के ऊपर क्लिक करना है, तो शेड्यूल हो जाएगा। बट बैक टू बैक नहीं लेते हम लोग प्रेजेंटेशन। ठीक है, सेम टू सेम रहेगा। तो अगर टीएम ब्लड का एक बार हो गया है तो बैक टू बैक सेट नहीं लेंगे, 1 या 2 दिन तक, या फिर 3-4 दिन तक, या फिर मे बी नेक्स्ट वीक में हो जाए। ओके, और सर मुझे टास्क अलॉटमेंट का भी ईमेल आ गया है एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाने का। हाँ तो जी। उसमें मुझे जो रेफरेंस के लिए वीडियो प्लेलिस्ट है वो नहीं दिया है सर ने। तो उसके अंदर कुछ लिखा है क्या, रेफरेंस प्लेलिस्ट, एक्सेस दिस रेफरेंस प्लेलिस्ट? नहीं, ऐसा नहीं दिया। तो उसका नहीं रहेगा। लिंक ही नहीं है। आप ये स्क्रीन शेयर करके दिखाना मेल।
वेट करो सर। फोन से आपने ज्वाइन किया, फोन में रहेगा ना जीमेल? हाँ तो वही फोन से करो ना? हाँ जी, फोन से शेयर हाँ कर दे, वेट सिर्फ करो मेल दिखाना वो, और करने की जरूरत नहीं। ओके ओके सर। क्योंकि अगर ये कॉमन इशू रहेगा तो हम लोग सर को इन्फॉर्म कर देंगे कि मेल के अंदर ये इशू है, ठीक है? ओके सर वेट करो सर 2 मिनट, फिर करता हूँ। शेयर करने का ऑप्शन नहीं है शायद इधर। शेयर स्क्रीन हाँ का सॉरी, ऑप्शन है। हे सर स्टार्ट में। वेट करो सर 2 मिनट, हो गया, नॉट अलाउ किया मैंने। ओके हो गया सर शेयर। स्क्रीन दिख रही है आपकी, मेल दिखाना। हाँ मेरी दुकान। सर्च कर लो ना, हैक वेदा का रहेगा तो। एक हाँ एक सर इधर ही था। हाँ ये तो सर इधर नहीं लिखा है। ऊपर से जाना, एकदम टास्क एकदम ऊपर जाना। ये दिखाना क्या लिखा है, आदित्य क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टीआरएस यूजिंग डिस्कशन वीडियो। अच्छा, वीडियो प्लेलिस्ट स्पेसिफाई किया, नीचे करना था जरा, स्क्रॉल करना और स्क्रॉल करना और स्क्रॉल करना, लास्ट तक जाना। यहाँ पे क्या क्या दिया है आपको? टास्क रेफरेंस के नीचे कुछ नहीं दिया ना, ठीक है। ये कौन सा टास्क है? ये SRS डॉक्यूमेंट बनाने एक का काम टास्क करना, ये मेल मुझे मैं। फॉरवर्ड करना। हाँ तो वही, हाँ ओके ओके। और सर मुझे उसके पहले ये भी मेल आया था, एक मेल आया था, रुको दिखा था, वो भी दिखा था, है कि वेदा, वो तो मेरे सब यही मेल भेजता हूँ आपको, व्हाट्सएप पे भेजू सर? हाँ, ये मैंने डाला है ना अपना ईमेल, वहाँ फॉरवर्ड कर दो। ओके चलेगा, ठीक है मैं करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ जी, ओके। सो दिव्यांश निर्मल। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। सर मेरे ट्रेलो बोर्ड में मतलब कुछ अपडेट नहीं आ रहा है। मतलब मैंने अपना दो टास्क कंप्लीट करके डाला था, ठीक तो है, एक टिक होता है जो टिक नहीं आ रहा, तो क्या मुझे प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा? क्योंकि मैं आपका क्लाउड कंप्यूटिंग से हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग से है, आपने टास्क कौन कंप्लीट कर लिया है? यस सर, तो पहले आपने टास्क वन असाइन न्यू टास्क या फिर शेड्यूल प्रेजेंटेशन पे यस, क्लिक किया था? नहीं सर, असाइन न्यू टास्क किया था, तो असाइन मेरा हो गया है, तो मैं अगला टास्क कंप्लीट कर रहा हूँ, तो उसमें बैठता हूँ उसका तो कुछ उसमें सर डेमो की बनाया था आपने? यस सर, मैंने वीडियोस अपलोड मतलब ट्रेलो पे किया था, और मतलब स्क्रीनशॉट ऑफ जो फाइल रिलेटेड स्टफ होता है वो सब मैंने ट्रेलो में अपडेट किया था। बाकी सब बच्चों को शायद आ गया था, टिक आ गया था सर, टिक मतलब सीन कर दिए थे, टिक कर दिए थे, मेरा नहीं किया है। तो मुझे क्या प्रेजेंटेशन देना होगा? क्योंकि सर के हिसाब से तो मतलब अगर मैं टास्क अपडेट कर रहा हूँ ट्रेलो पे तो प्रेजेंटेशन का जरूरत तो है नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अब प्रेजेंटेशन का जरूरत नहीं है। प्रेजेंटेशन का जरूरत है, आप एक डेमो वीडियो बनाइए प्रेजेंटेशन का, ठीक है? उसके बाद क्लिक कीजिए शेड्यूल है प्रेजेंटेशन के ऊपर। और लास्ट टाइम आपने जब असाइन न्यू टास्क किया था, उसको 48 आवर्स हो गए क्या? यस सर, तो आप फिर मतलब से उसके ऊपर पहले ही क्लिक कर ली कीजिए असाइन न्यू टास्क के ऊपर, अगर 48 आवर्स हुए तभी। सर। मैं थर्ड टास्क मतलब मेरे दो टास्क थे, दो टास्क का मैंने वीडियो बना के डाल दिया ट्रेलर बोर्ड पे, तो फिर मुझे क्या असाइनमेंट मतलब प्रेजेंटेशन में क्या दूंगा जब मतलब वीडियोस तो मैंने पहले डाल दिया लास्ट ट्रेलर। लास्ट टास्क का, यस सर, ये लास्ट आपको सिर्फ टास्क। क्लिक करना है, डेमो बनाना है, शेड्यूल के ऊपर क्लिक करना है और असाइन न्यू के ऊपर क्लिक करना है। वो डेमो हम लोग चेक करेंगे कि क्या है कैसा है, अगर अच्छा रहेगा तो आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा कि यहाँ प्रेजेंटेशन दीजिए, नहीं तो आपको न्यू टास्क असाइन किया जाएगा, अगर आपने असाइन न्यू टास्क पे भी क्लिक किया है तभी, ठीक है? क्योंकि आपने यस डेमो सर। दिया है, अब ये हमको कैसे मालूम पड़ेगा? आपको शेड्यूल करना पड़ेगा, तो हम लोग चेक करेंगे ट्रेलो के अंदर कि डेमो भी आपने डाला है, ठीक है? अच्छा, डेमो करना पड़ेगा मतलब हाँ, इसमें। एक डेमो बना दीजिए अपने टास्क का, उसको ट्रेलो के ऊपर डाल दीजिए, शेड्यूल कीजिए, और अगर 48 आवर्स हो गए तो फिर असाइन न्यू टास्क के ऊपर फिर से क्लिक कीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। यस। सो
Devansh, we talked to you, and Aditya, we have also talked to you. Aditya, you have any more query, or you can lower your hand. So Raju Jakani. गुड इवनिंग सर। Yes. सर वो सर्टिफिकेट का कब आएगा? आपको बताया ना 24 तक मिलेगा। अच्छा, ऐसे सर वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो प्रोग्राम चालू हो रहा है यस, उसमें हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं? आपको मेल आएगा, उसके अंदर आपको कंफर्मेशन पूछा जाएगा, और अगर आपको मेल नहीं आया तो फिर आप ट्रेलो के ऊपर डाल दीजिए कि आई एम इंटरेस्टेड, कभी मंडे को, जब नहीं आएगा तब। अगर सब कुछ हो गया तो भी आपको नहीं आया तब पहले ही मत डाल देना। ओके सर। ऐसे ठीक है। ये पेड इंटर्नशिप का मैंने ट्रेलो पे डाला था, हाँ जी, सर का अभी तक कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं है। आपका 2 बार प्रोबेशन डाल अभी चुका। चेक कर रहे, प्रोबेशन चेक कर रहे, 28 को जब आपका ये लेटर आ जाएगा तब आप एक बार पूछ लेना, अगर आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया है तो। ठीक है, ओके सर। तुम्हारी पूरी ऐसे टीम का ये कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ओके सर। ऐसे जो न्यू टास्क मिला है तो मेरे को एक सैंपल एसआरएस डॉक्यूमेंट का चाहिए था, वो भी ट्रेलो पे एसआरएस डाला डॉक्यूमेंट हूँ। तो आपको बनाना है ना, आपको चाहिए कि सर वो। बनाना तो है, लेकिन एक सैंपल दोगे तो समझ में आएगा कि क्या उसमें डालना है क्या नहीं डालना, ओके, सी ताकि कुछ सी मिस्टेक्स ना हो। सी सी वन थिंग इज दैट तुमको उसके अंदर रेफरेंस वीडियोस मिले हैं? हाँ सर, रेफरेंस में वीडियो मिला है, लेकिन उसमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन है कि 2 मिनट क्या क्या। रुको, उसके अंदर तुमको हाँ रेफरेंस वीडियो मिला है ना, और हाँ तुम्हारे टीम में आदित्य भी है, ठीक है, हाँ। उसको भी सेम टास्क मिला है। सर नहीं, थोड़ा डिफरेंट है उसका। ओके। मेरे को डाइट के रिलेटेड है, मेरे को आकाश को और सौरभ को, ठीक और है, इसका थोड़ा डिफरेंट है, सेम नहीं लग रहा है। मेल चेक किया था इसका। ठीक है, चलेगा। एक काम करो, तुम भी मुझे मेल कर दो अपना वाला टास्क। ठीक है, एक ओके बार सर। चेक करके बता दे। और जो तुम्हारा ये है ना क्या एसआरएस डॉक्यूमेंट का, ये देखो बहुत बार क्या होता है, अगर जैसे तुम अगर जब रियल वर्ल्ड में काम करो क्लाइंट के सामने, तो तुम्हारे पास पता हाँ है क्या सर। रहेगा, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चैट मैसेज रहेगा जिसके अंदर वो बताएगा हाँ ये करना, दैट्स इट। सो वो तुमको देखना है कैसे बनाना है एसआरएस डॉक्यूमेंट। ठीक है, पहले ट्राई करो, और हम लोग चेक करेंगे कि तुमने अच्छे से बनाया नहीं बनाया। अगर नहीं बनाया तो फिर एक मतलब वो लोग प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि देखो तुम्हारे पूरे टीम के हिसाब से देखना पड़ेगा ना। सपोज तुम्हारी टीम के अंदर हाँ। कोई एक बंदा है जिसने अच्छे से बनाया है, ठीक है, तो तुम लोग एक साथ वर्क ओके, करके चेक करो कि मतलब ट्राई करो एक साथ वर्क करने का, तो सर्टनली मालूम पड़ जाएगा। एज ए तो ग्रुप मैं काम मेरे करो। अकॉर्डिंग बनाऊंगा तो चलेगा ना? यस, तुम अपने अकॉर्डिंग बना लो। मैं भी एक बार सर को बता दूंगा अपनी तरफ से, लेकिन अपने अकॉर्डिंग बनाओ, हम लोग चेक करेंगे तुम कितने अच्छे से बना पा रहे हो, और उसके बाद बताएंगे तुमको। ठीक है, ओके और सर, अगर चलेगा। जरूरत रही तो सैंपल सर भी दे देंगे, सैंपल दे देंगे तुमको सर। ठीक है, पर तुम्हारा टास्क चलेगा ही सर। वो है एसआरएस बनाने का, अगर तुमको एक सैंपल दे दिया, अब तो मतलब यही होगा ना, बहुत सारे लोग बस हाँ कॉपी सर, पेस्ट कर तो लेंगे। कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट रहता है ना, एक एक पहले थोड़ा इंट्रो लिखते, थोड़े जन एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखते वैसे। बट तुमको वो सब फॉलो तो करना है ना। मेरे में एब्स्ट्रैक्ट के बाद इंट्रो आता है, इसलिए तो मैं सोचा मेरा अकॉर्डिंग बनाऊं या आपका कुछ अलग रहेगा तो आपके रिलेटेड नहीं नहीं, बनाऊं, देखो इसलिए मैं पूछ अकॉर्डिंग रहा नहीं होता, एक देखो फॉर्मेट होता है। ठीक है, फॉर्मेट को पता लगाओ क्या हूँ। सर। कैसा फॉर्मेट है, उसको फॉलो करो। और लेकिन हाँ, ओके अगर सर। कंटेंट मैटर्स, ठीक है, अगर तुम कोई भी जब डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो फिर ये फॉर्मेट हाँ। से ज्यादा कंटेंट मैटर करता है। अगर तुम्हारा कंटेंट बहुत अच्छा है, तुमने बहुत अच्छे से लिखा है, तो फॉर्मेट थोड़ा यहाँ वहाँ चलेगा। ठीक है, बट पूरा चेंज मत करना। बट सपोज एब्स्ट्रैक्ट ऊपर नीचे होगा तो भी चलेगा, लेकिन हाँ तुम्हारा कंटेंट सही रहना चाहिए। अगर तुम्हारा कंटेंट भी बेकार है तो तुमको फॉर्मेट फॉलो करना ही पड़ेगा, सो दैट योर डॉक्यूमेंट मेक सम काइंड ऑफ सेंस। ठीक है, एज ए ग्रुप काम करो, तुम लोग डिस्कस करो कैसे बनाना है क्या करना है, और फिर उसको बनाओ। ठीक है, ओके सर। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो सिर्फ एक बंदा काम नहीं करता, तुमको एज अ टीम हाँ। ब्रेनस्टॉर्म करना है कि क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट्स है, क्या है कैसे, उसके बाद तुमको डॉक्यूमेंट बनाना है। ठीक है, ओके सर। तो एक मीटिंग कर लो तुम अपने टीम के साथ। सौरभ है आई बिलीव तुम्हारे टीम के अंदर, आकाश भी है, तुम तीनों एक हाँ सर। कॉमन मीट करके उसके अंदर डिसाइड कर लो किसने कितना वीडियो देखा है, उसके हिसाब से क्या कैसे लगता है। एक फॉर्मेट या फिर 2 फॉर्मेट के ऊपर तुम लोग कर लो, तुम 3 बंदे हो ना, तुम 3 अलग अलग फॉर्मेट कर लो। एक एक बंदा अलग एक के ऊपर काम करेगा, लेकिन हाँ बता काम करो टीम को कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, सो दैट लाइक दे विल ओके ऑल्सो सर। नो कि ऐसा ऐसा है। ठीक है, हाँ। हाँ। ओके सर, थैंक यू। यस, सो नेक्स्ट इज हेलो दीना। हेलो सर, आदित्य वेट, आदित्य। आई विल कॉल योर नेम। यस आदित्य। यस सर, आप जरा देखेंगे क्या राजू और मेरा स्टाफ सेम है कि नहीं? आपको मेल किया है, राजू भी आपको करेगा मेल। हाँ ठीक है, मैं चेक कर लूंगा, और तुम्हारे रेफरेंस का बताता हूँ मैं सर को। ठीक है, क्योंकि वो मेल का इशू तो सबको चेंज करना पड़ेगा वो मेल। ठीक है, चलेगा वो ठीक है, हो थैंक यू जाएगा। सर।
हाँ, सो दीना मंदू मैती मैती। हेलो सर, यस, गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग। यस। सर मैंने मेरा प्रेजेंटेशन रेडी कर लिया, जो मेरा जो वेबसाइट का टास्क था, डॉक्टर साज वेबसाइट मैंने ठीक है। कर लिया, बट कैसे मैं प्रेजेंटेशन दूँ कुछ समझ नहीं आ रहा यू आर फ्रॉम विच बैच? है। SRST कॉलेज से। बैच नॉट कॉलेज बैच। द नहीं सर, डेट ऑन व्हाट डेट यू ज्वाइंड? सर देख रहा हूँ। What was the date of joining? Are you from 16 Feb? नहीं सर, मैंने ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझसे, कौन से बैच में हूँ सर। Are you? When did you join? When was your? अरे ज्वाइन कब किया था आपने हैकवेदा को? मैंने वो 21 फरवरी। तुम मतलब फिर 16 Feb की बैच से हो ना? हाँ हाँ हाँ। तो सर ने एक वीडियो अपलोड किया है ना, उसके अंदर बताया है क्या फॉर्मेट है। फर्स्ट डे तुम नहीं थे क्या? नहीं सर, फर्स्ट डे में नहीं था। ठीक है। कॉमन बोर्ड के अंदर ना इसका लिंक है, उसको शेयर कर दूंगा, तुम वो वीडियो देख लेना, उसमें सर ने एक्सप्लेन किया अच्छे से। ठीक है। सर कॉमन बोर्ड के अंदर एक किया रहेगा इंटर्नशिप मीटिंग रिकॉर्डिंग लिंक, उसके ऊपर एक कार्ड रहेगा, कार्ड के ऊपर क्लिक करना, उसके अंदर सर ने दिया है कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कैसे करना है। ठीक है। बट एनीवेज आई विल टेल यू, अगर तुम्हारे जैसे तुम वेब डेव ग्रुप में हो ना, तो फिर मैं ही तुम्हारा टीम लीडर हूँ, तुम एक काम कर सकते हो, तुम उसको ट्रेलो के ऊपर पोस्ट कर दो कि तुम्हारा टास्क 1 हो गया है, और उसके बाद ईमेल तुमको आया होगा या फिर आज आएगा, उसके अंदर कर देना शेड्यूल प्रेजेंटेशन और न्यू टास्क का। बस शेड्यूल पे क्लिक करने से पहले एक डेमो वीडियो बनाना। ठीक है। और ओके सर। कल के मीटिंग के अंदर मैंने सर डेमो वीडियो एक बना भी लिया, बट सेंड क्या वो ईमेल आईडी में कर दूं क्या? नो नो, नॉट ऑन ईमेल, शेयर इट ऑन ट्रेलो। ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दो, फिर ड्राइव का लिंक दे देना, लेकिन लिंक को पब्लिक रखना, ठीक है, ताकि हम लोग देख लें। ओके। और जब डेमो वीडियो बनाओगे ना, तो उसका एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट कल के मीटिंग के अंदर सर ने एक्सप्लेन किया था, तो कल का जो मीटिंग रिकॉर्डिंग है तुम उसको देख लेना और उसी फॉर्मेट के अंदर बनाना शेड्यूल। ठीक है। ओके सर। तो तुमको 2 देखना है, एक फर्स्ट डे का देखना है और एक कल का देखना है, और उसके बाद ये करना है शेड्यूल के ऊपर। असाइन न्यू टास्क तुम कर सकते हो अगर तुमने डिप्लॉयमेंट लिंक डाल दिया ट्रेलो के ऊपर तो। ठीक है। ओके सर। And this is for all the people who have joined from the 16 February batch. You have to watch the video of first day that sir has posted and yesterday's video, whereas sir explained what is the proper code of conduct for your presentations. Thank you, sir. So Rahul Kumar, you have raised your hand again. हेलो। Yes. Turn your camera. Yes. सर मैं ये बोल रहा था कि सर मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा स्क्रीन आपको शेयर करके कुछ दिखा सकता हूँ क्या सर? No, errors will are strictly for on the Trello. Your team Yes. leader will respond to it. सर इस प्रॉब्लम ये है कि सर जब मैं अपडेट प्रोग्रेस पे क्लिक कर रहा था तो नो कार्ड फाउंड बता रहा था। एक और उसके नीचे एक लिंक दिया गया है, उस पर जब क्लिक कर रहा हूँ तो वहाँ पर 2 कॉमन ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। एक कॉमन ग्रुप दिखाई दे रहा है, एक जावा डेवलपर ग्रुप दिखा दे रहा है। हाँ। तो सर जो हमारी जो मतलब टास्क है वो तो सर जावा डेवलपर वाली ग्रुप में ही मतलब अपलोड करनी है ना? हाँ जी। तो सर जब मैं वहाँ पे कर रहा हूँ तो फिर मतलब वहाँ पे बहुत सारे कार्ड बने हुए, तो कहाँ पे अपलोड करनी है एग्जैक्ट ये समझ में नहीं आ रहा है सर। कहीं प्रोग्रेस अपडेट करके लिखा है? नहीं सर, वहाँ पर जावा डेवलपर ग्रुप में डिस्कशन करके लिखा है? हाँ, प्रोजेक्ट डिस्कशन करके लिखा हुआ है सर। वही करना है। ओके। ठीक है, वही करना है। ओके, थैंक यू सर। यस। ओके, राजी अहमद हाशमी। और कैमरा ऑन कर लीजिए अपना आप। यस राजी। हाँ, तो आपको कल मैंने बोला था, वो मैंने ट्रेलो में डाल दिया था, ठीक है। तो हाँ। सर अभी तक रिस्पांस नहीं दिया कुछ। हाँ, तो सर देखेंगे आपका इशू क्या है। ठीक है, तो हाँ, मैं जैसे कर पहले देता हूँ। भी मतलब 3 तारीख को ही डाला था मैं, उसमें कुछ नहीं आया रिस्पांस। फिर से कल आपसे बात हुई तो कल मैंने फिर से ये ठीक है, मैं किया सर को एक ट्रेलो बार में। बोल देता हूँ चेक करने के लिए। ठीक है। ठीक है, और वो बोल दीजिएगा कि आदित्य नहीं है उसमें ग्रुप में। कौन से कार्ड में हो आप? हम तो तीनों में है, टीएम हर्ट में नहीं है नहीं, आपने और अपलोड कहाँ किया है वो?
कौन से कार्ड में किया है? मोबाइल डेवलपमेंट में। तो मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर बोल दूंगा सर को, चेक कर लेंगे, ठीक है? ठीक। हाँ, थैंक यू। यस। ऋतुजा वलकेकर। यस, गुड हेलो इवनिंग। सर। यस। गुड इवनिंग सर। सर मैं 16 फरवरी के बैच से हूँ यस। और मुझे अभी तक कोई एक्टिवेशन का मेल नहीं आया है। एक्टिवेशन का मेल? और ईमेल एड्रेस डालिए चैट के अंदर। ओके सर। कोई ईमेल हैकपेदा से एक भी ईमेल नहीं आया? नहीं, कुछ भी नहीं, उस दिन से तो कुछ आप भी ईमेल नहीं। डालिए, ठीक है? लास्ट मीटिंग में आप कहाँ थे? लास्ट मीटिंग की सर मैंने। तो लास्ट मीटिंग के अंदर आपने ईमेल दिया था? हाँ, परसों भी डाला था मैंने मेल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप ईमेल डालिए, मैं चेक करवाता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। पुनः रोहनकर, यू हैव सेड वन मोर इशू, प्लीज टर्न योर कैमरा। सर जो मेरा इशू है उसका टास्क का जो सबमिशन डेट है तो लास्ट डेट कल की है, तो अगर इशू कल तक हो जाएगा तो सबमिट कर सकती हूँ, और अगर नहीं होगा तो फिर तो फिर आउट वो ऑफ। टास्क डेडलाइन के अंदर रहेगा, उसका एक वैलिड रीजन है आपके पास कि इशू है, ठीक है? तो फिर वो मतलब थोड़ा बहुत हम लोग देख लेंगे कि ठीक है इशू है, तो थोड़ा मतलब लेट हो गया है, दैट इज नॉट एन इशू। ओके, हाँ, yeah. थैंक यू। Then if you have like a valid reason, then it is okay to have a like late submission. ओके, थैंक यू। Deena Bandhu Methi, I have said it is in the common board. When I will upload today's internship meeting, I will also like point where are those meetings. Okay. Then are there any more questions? Please, guys, put them in chat or please raise your hand. So Chetan Verma, you have said same issue. Hello, Chetan. Yes. जी सर, हेलो सर। Turn your cam on first. यस सर। What you have said, you have same issue. Clicked on. Yes, sir. Are you on which group? सर जावा डेवलपर ग्रुप। Okay, so you are also not getting the card यस सर, नॉट गेटिंग। in the email or in like the Trello board? सर ट्रेलो कार्ड, ट्रेलो बोर्ड। In the email, right? When you are following Yes, the sir. link in email. यस सर, Okay, ईमेल में। okay, या yeah. Okay, I will. You have said your email is okay. ओके। यस Okay, I will tell sir. So there was one guy who said he has presentation to do. You जी still सर। no, not you. Some other guy. ओके। हेलो सर। Yes, Sai Prasad. सर एक क्वेश्चन और था मुझे। Yes. सर जो इसमें जो पूछा ना, जो सेकंड टास्क था उसमें मैंने पीपीटी और टेक कोड मैंने अपलोड कर दिया था, उसके अलावा भी और कुछ करना है? नहीं, पीपीटी और कोड काफी हो गया सर। मतलब उसमें और जैसे वीडियो वगैरह, तो अभी वो कब करना है जो प्रेजेंटेशन है? डेमो बना के आप डाल सकते हैं कभी भी, जब भी आपका रेडी हो जाए। ओके ओके। यस ठीक है, सर। बट ठीक है प्रॉपर सर। कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कीजिए, जो कल बताया था, स्पेसिफाई किया था, उसके बाद करिए। ओके। ठीक है। जी सर, हाँ जी। थैंक यू। यस साई प्रसाद। यस सर। इसमें स्क्रीन विजिबल सर? Yes, your screen is visible. Yes sir. This is my Figma file. Then I have done and exported through local file, and then I deployed it in website, like I deployed it in 000 web host. Yeah, these are my files. And I've written a PHP file. So, and then I wrote jQuery to connect to server, and yeah, here I'm getting.
Yes. Can you reload the page? Yes, sir. Sorry, just a minute. Yes, sir. Click on search. Okay, but see, when you are like, you said you have scheduled for a presentation, right? Yes, sir. So when you are giving presentation for this task, because like there are all the new interns are joining and they are also getting the same task. Okay, so your presentation may get like viewed by all the new interns. So what I want you to do is, when you have like schedule a presentation, you can create a demo video. In demo video, start with your name, like what is your name, you are from which college, when did you join the like organization, and you are from which batch, and you are from which group. So suppose your name is like Sai Prasad, then you have to say you are from this college. Then you have to say that I am from this batch, that is like 1st Feb or like 16 Jan or 16 Feb. Okay. And then Okay. you have to specify like you are from like which group, you are from web developer group or Django group or whatever. Okay. And then Okay. you have to come to like the task, what your task was. In the task, what you can say is, first of all, like simply say what your task was. You have received the email, there is a task subject. Say what was Okay. the subject of the task. Okay. And then create a presentation, PPT file. In PPT file on the first page, have your like, personal information, like this is your name and what I specified, what I told you, like your college and this and everything. Okay. On the next slide, you can add the subject. On the third slide, you can add like the, like a small bullet point, like what is the agenda of the presentation. Okay. In the agenda, what you can say is that what tools you have used. First of all, you have used Figma for the front end, jQuery for connecting backend with front end. You have used hosting 00 web host, and then you have used like MySQL database. For the backend language, you have used PHP. Okay, so these are the like 5 main like things that you have specified. Sixth is like testing the API, that is Postman tool. So in total, there are like 6 bullet points. Okay, that only like bullet points are there. First is backend, connecting backend with front end, testing the PHP codes, and then for backend you have PHP, and the for database you have MySQL data. That is the content. Okay, now you have a step-by-step like format. First there will be backend, then connecting it, then like making web services, then uploading like your 00 web host, and also the database. So have it in like in a proper format, a step-by-step format. In the demonstration, go step by step. Also like tell what tools you are using. You can like certainly have 1 or 2 slide on that, like you are using Figma tool, why you are using the Figma tool. Okay. And Okay. after the third slide, what you have to do after like the agenda of the presentation, on the fourth slide, what you can add is like what is Figma, like, basics of like what the Figma tool is and what your thought process was while creating this design. You have a design, so what your thought process was, what you thought about when you were creating the design. In the Figma file, like we follow a like proper format. See, every time you have a a website. So how the website is created? First of all, you brainstorm ideas with your teammate. Okay, whoever your team is. If you are alone, you still like brainstorm like how you will create it. On a paper, you create a wireframe of your website, and after that in Figma, you give it a design. Okay, so on the paper you have a proper wireframe that yes, my button will be like in at this place, my navbar like it will be at that place. I will be following a horizontal navbar, not a sidebar navbar. So this like this shows your like thought process on like, yes, you understand the client requirement, and now based on what your client requirement was, now you are having that thought process, and now you are creating a design. That is what your wireframe shows. So include that wireframe and then show the Figma design, that after this wireframe, now I have created this design, and what is like my reasoning behind this design.
Why are my buttons on black color? Why some of the navlings are white colored? Why some of the navlings are black colored? Why my, like, the background color is, I'm following like this blue color for the background. You have to, like, tell us like what was your thought process. And you also have to, like, don't add like too much detail, but had like, half or one line to justify your mistakes. I can certainly see that your book and a point and this, they are not aligned perfectly. Okay. They are not aligned perfectly horizontally. The enter location, specialist and search are like, aligned to the left side of your screen. And there is too much space in the right, like, on the right side. It is like just simple blank space. Okay. Do a, like, justification that I was going to add this button, but I couldn't add the button because this was not in the client requirement. Okay. So I have to, like, remove it, and now I am like just giving it in deployment. Okay. And then, like, justify why you are using like some of the tools like jQuery and this. So simply you can say that is in this project, what we have is a simple doctor's appointment. That is a standalone single page application. Okay, that is a standalone single page application. In the single page application, we only have one client requirement. That is when we search for specialist and location, I should get the list of doctors in my organization. User should get the list of doctors on search. That is all I have to do. So for that, I don't have to, like, go too deep in the CSS and that. I can just use the simple tools like Figma and create a website in a, like, really fast way. You can have this kind of justifications. You have to figure out like what to speak about other things, but I would say like you can easily make a 10-minute presentation on this. Okay. Yeah. Try to add them. Don't have like too many presentation like PPT slides. Add like 5 or 4 or like 4 to 5. Just simply like have a content like what is the agenda of the PPT, your introduction slide, task introduction slide, which will have like the subject of the task and like what is the client requirement, what you understand from the subject and what to understand from the mail. And then like have like 1 or 2 slide where you will like simply explain, give justification why you are using these tools that you have used. Okay. And then do the main demonstration. Okay. Yes, you can do that. So when you will get the mail for like your scheduler presentation, you can do that, or certainly you can create a demo video on how I have told you, create a demo video. We can post it in like Trello. And if it is good enough, then we can say that to all the new interns that watch your demonstration that you have performed it really well. And they also have to do it in the same format. It will be a sample for everyone. Okay. Yeah, sure. Take your time. Don't like rush it too much. Like make a proper demo video. Okay. Okay, sir. Yeah, thank you. Yeah, actually, sir, I have other query. Wait, who was that? Hello. Hello, can I speak, sir? Wait, can you mute yourself? Okay. So now whose mic is on? So Ranjit De. Hello, Ranjit. Can you turn your cam on? Hello, Ranjit. Ranajit. Sorry, Ranajit De. Okay, I'm removing you from the meeting. You have your. Okay, so is there anyone else left for the general queries, or we can end the meet now? Hello, sir. Yes, Sai Prasad. Yeah, actually, I got a mail regarding task to like Yes. like the deadline was 24. So shall I start that? Yes, as soon as you get your task to email, this is for everyone. If you have like your task to every like email and your task one is done, then start working on task two immediately. Okay. And if there are like some changes need to be done in your task one, you will be informed via mail or on your Trello. Then you have to just simply make the changes and continue with your task two again. Okay, sir. Yeah. Yeah. So many of you like may have received task to email already and your task one is not done, but keep that like task to email and then say that I have already received it previously. Now I'm working on this task too. Put it in Trello.
Okay, I hope now everyone's general queries are done. Excuse me. हेलो Yes, Rajiv. हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि मतलब हमको कॉलेज में वो सर्टिफिकेट चाहिए कंप्लीशन का, तो मतलब ये टीएलओ में डाल दें क्या डिटेल्स? ज्वाइनिंग का भी था आपका? ज्वाइनिंग का मेरा 15 अक्टूबर था सर। अक्टूबर तो आपने ट्रेलो के अंदर डालना रहेगा ना? जी ट्रेलो के अंदर डाल दीजिए आप। ओके हाँ, अपने ग्रुप के अंदर डाल दीजिए, जो भी आपका ग्रुप रहेगा। ओके थैंक यू। और अब सर को बोल दीजिएगा जरा उसके बारे में। हाँ, वो इशू का बोल देता हूँ मैं, क्या आपको इशू है वो देख लेंगे। थैंक यू। आपका टीम लीडर कौन है आपके इसमें? एंड्रॉइड के अंदर कोई टीम लीडर नहीं है क्या? नहीं सर ही है। हाँ, तो सर ही है, तो सर को बोलता हूँ मैं, ठीक है। ठीक। खुशबू, वाई यू हैव पुट योर ईमेल? हेलो खुशबू नरेंद्र चौधरी। Sir, should I give the presentation? Rutuja here. You said you have not make your presentation. Hello Rutuja. Yes, sir. You said you haven't made your presentation yet. How you will give your presentation? Sir, I have made it. Okay, then you can give your presentation. Share the screen. Yashchandra. Khushbu, have you like not received your activation mail or your attendance mail? Can you specify? Have you get like any email specifying that you have activated? Your status is now active. Just put it in chat if you can't like turn your cam on. So my screen is visible. Yeah, your screen is visible. So, hello sir, my name is Rutuja Kadam. I'm from JSPM's RSCA college. So I'm from 16th January batch. So my task was creating PEGA application. So where I have created the claim set. So basically, what is PEGA? So everyone haven't got about the PEGA. तो पेगा एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें ऑलरेडी फ्रेमवर्क क्रिएट होता है, लाइक हमें business process. Someone can also Rutuja, you are lagging. We can't hear anything. certain operations and Wait, Rutuja. Your internet connection is not good, I believe. wait, sir, I'm again sharing. Your voice is not properly like audible. Hello. Yes. Now it's audible. Yeah. Yeah. Sir, whatever I tell you, you have heard it. No. I only heard what is PEGA. After that, I didn't hear anything. What is advantages of the PEGA? So PEGA is a software for business people. Like Hackweda is one of the company where we can use the PEGA to, and also one of the advantages low code platform. In the PEGA there are 3 studio: App Studio, Development Studio, and Business Studio. In App Studio there is already low code is stored.
So PEGA is also called as low code platform. There is no building from such code. No, someone is from mechanical background or civil background also can learn the PEGA in 2-3 days. So there is nothing from building from sketch. And also last but not least, lot of framework built for use. So PEGA is a software. In that also there is a builded framework. So we can easily work on that. So work for to create an application, like we have gone through the 3 steps. Like first we have to decide your base application. In PEGA there is already existing framework, so PEGA rules. So here is a PEGA is a base application. Then we have to decide our application type, like it is a framework or implementation. As I am a student, I will be creating the implementation application. And last we have to decide the enterprise application layer. Like अगर हमें नीड होगी तो कौन सा एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हम केसेस दे सकते हैं. लाइक बैंकिंग का होगा तो बैंक के लिए कौन से केसेस करने पड़ेंगे, वो सब हमें यहाँ पे केसेस देने पड़ेंगे. So here is the demo of creating PEGA application. So for that, first we have to create the user operator ID. Operator ID in the sense, if we have to log in Instagram, we have to create our username and password. Same as here, we have to create the user operator ID and password. And also, if we have to work on the PEGA, we have to get a license from the PEGA system. Create any application, we have to click on the create, where is here, and we can create the application.
Hello, sir. Hello. Yes. So that's it, sir. Okay. So okay. So you're from which group? DevOps group. Okay. So there was introduction given to by you. Please turn your camera. There was introduction given to you. The intern introduction was given. That is good, but you should have included like you're from which batch. You didn't like quite specify that. And for your task introduction, you only have subject order task. We didn't know what task you were doing and what was that. And then your design was good, I would say. Yes, your PPT design was really good. It was like one of the best designs I have seen like for the PPT. I will give you that. But explanation was good for like advantages part and for like rest of the part. And you have also included the demo. That is a good thing. But your demo was not good. It was like just bad demo because you didn't say anything. You were playing a video. That video was inaudible. We couldn't hear anything. Your explanation was like there was no explanation. You just sometimes you went to seek bar and uh, I believe went to some other 2 minute, 3 minute, 1 minute. You were just jumping in a video. We couldn't understand what was going on because you didn't give like any proper context on what your task was. So your entire demo part was like I don't think it had like any kind of meaning in presentation. So you have to work on that. Make sure have a pre-preparation. I know I believe you created this presentation in 1 hour because you didn't have, but don't give presentation for the sake of giving presentation for just doing that. Okay. Sure, sir. See, your design was good. Okay. I would give you that. And you also have some skills for giving the presentation because your explanation was good. Whatever your presentation was, it was good explanation. The design was good. The content was it was not too much content and not too less content. It was like just the right amount. It was good, but you didn't have any kind of preparation. Yes, sir. I Okay, but created and video. this will be and there was also internet issue. I Yeah, couldn't understand what is PEGA part was not clear at all. Okay, so sorry, this sir. I will will work on be see this will be reflected in your evaluation. Sir will see this presentation, and if it is needed, then he may tell you to present again because Okay, that sir. was not good. Your demo was not at all acceptable. Okay, sir. The way you created was right, I would say, but add some kind of conclusion and ending. There was no conclusion and ending. In PPTs. Yeah, in the PPT, have some Okay. kind of conclusion that we did this and that was my conclusion. Okay. Okay. So this But was my first presentation, so that's why, sir, and I have created in. everyone is having their first presentation. No one is having their second presentation because the presentation thing we started in last 3 weeks. Okay. Before that, we only used to have demos. Okay. Okay. So everyone is Okay, sir, having the sure. first time presentation. Okay, sir. Work on that. Try to improve your presentation. If you are called again, then you may have to give your presentation or you will get the new task. Okay. Okay, sir. Yeah. So is there anyone else left for this? Vaibhav soon, you had put something in chat. Can you turn your cam on? Vaibhav and Khushbu, turn your cam on. Khushbu, please specify, you said today not received inactive mail. What does this mean? What kind of mail are you speaking of? Have you received the activation mail? If you don't answer, then your query will be not solved. Sir, today I got attendance mail. I got not attendance mail. Yeah, you will get it by before 12. And if you still don't get it, then if you have posted your progress update in Trello, you will get your your attendance. You will get your attendance. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah.
Okay, then I believe we are done with all the general queries and the presentation. यश एक बार मुझे जिनका एक्टिवेट नहीं हुआ है उनका मेल भेज दो, अकाउंट yes, एक्टिवेट नहीं हुआ है जिनका, yes ma'am. है ना? तो अकाउंट यस मैंने नोट किया है, वो मीटिंग के बाद आपको शेयर कर दो क्या? श्योर 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 श्योर, या ओके, yes ma'am, then I will end the meet. यस यस, Yes, thank you.